Good morning, friends. Welcome to the maths class. Please like, share, and subscribe. Today we are going to solve exercise 4.4, question number 1 and 2 of standard 9th. Chapter is quadratic equation. Quadratic equations. Find the nature of roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. Nature of roots निकालने हैं. First is 2x square minus 3x plus 5. Nature of roots के लिए हमें चाहिए होगा discriminant, and we know that discriminant is equal to b square minus 4ac. b square minus 4ac. In this equation, a is 2, b is minus 3, and c is 5. Now discriminant is b square. Now discriminant is equal to minus b square minus 3 square minus 4 ac. Minus 3 square is 9. 4 ac is 4 2s are 8, 8 5s are 40. 9 minus 40 is equal to minus 31. Minus 31 is less than 0. अगर less than 0 है तो it has no real roots. No real roots. इसके roots हो ही नहीं सकते. If your discriminant is greater than 0, then it has two distinct real roots. If your discriminant is equal to 0, then it has two equal real roots. If your discriminant is less than 0 means अगर वो नेगेटिव में है तो it has no real roots. उनके roots हो ही नहीं सकते. Let us take another example. 3x square minus 4 root 3x plus 4 equals to 0. Here a is equal to 3, b is equal to minus 4 root 3, and c is equal to 4. Now discriminant is equal to b square minus 4ac. b is minus 4 root 3, 4ac. Minus square is positive, 4 square is 16, root 3 is 3, 16 3s are 48, 4 3s are 12, 12 4s are 48, 4 3s are 12, 12 4s are 48. 48 minus 48 is equal to 0. It means it has two equal real roots. इसकी जो x की वैल्यू निकलेंगी वो दोनों ही सेम होगी. अगर उसने कहा था कि इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम, अगर वो है तो उनको निकालना भी है. देन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a. x इज इक्वल टू माइनस b इज माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 0 बाय 2a. a इज 3. x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 इज 0 बाय 6. 4 रूट 3 बाय 6. 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2 2s are 4, 2 3s are 6. 2 रूट 3 बाय 3, दैट इज योर value of x, and both are same, then second value is also 2 root 3 by 3. These are the solution of this quadratic equation. Third part, try yourself. Let us take second sum. Second sum is find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal real roots. हमें value of k निकालनी है अगर they have two equal real roots. We know that, अब हमें यहाँ start करना है.
अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसने कहा कि 2 इक्वल रियल रूट्स, हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट if quadratic equation has two equal real roots, then discriminant equals to 0. डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के. एंड डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. In this quadratic equation 2x square plus kx plus 3 equals to 0. A is 2, B is k and C is 3. Now putting the value b square k square minus 4ac equals to 0. K square is equal to 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, इधर माइनस का इधर आगे प्लस. के स्क्वायर इज इक्वल टू 24. अगर स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊँ देन इट बिकेम प्लस माइनस √24. √24 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टर करेंगे 24, 12, 2, 6, 3. नाउ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2. पेयर में से एक बाहर निकालेंगे, ओनली वन पेयर इज देयर एंड अंदर √6. Then the value of k is plus minus 2√6. Second part of this sum is kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. Here also given they have two equal roots, and we know that if quadratic equation has two equal real roots then discriminant is 0. It means here b square minus 4ac equals to 0. Now kx into x minus 2 plus 6 equals to 0. kx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकेम kx स्क्वेयर. kx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. Here a is equal to k, b is equal to minus 2k and c is equal to 6. Now b square 2k square 4ac is equal to 0. Minus square is positive, 2 square is 4, k square. 4 6 are 24, k equals to 0. Now take 4k common, it became k minus 6 equals to 0. If 4k equals to 0, then k is equal to 0 by 4, 0. If k minus 6 equals to 0, then k is equal to 6. Both values are here. K is possible 0 and k is possible also 6. Thanks.